Good morning, students. So, let me welcome you for another fantastic session on ratio analysis. Our pending ratios, the last category of ratios is activity. We have already discussed students liquidity ratios, where we have seen current ratio, quick ratio, and super quick ratio. So the three liquidity ratios we have seen, and we all know that liquidity is nothing but the ability of the business to pay the short-term liabilities on time. That is to pay current liabilities out of existing current assets. Now we are going to see the activity ratios or turnover ratios or efficiency ratios. Very important for any business, that how the turnover is happening, and that is how we are going to see these ratios. Now you can see that activity ratios are calculated on the basis of sales or turnover, because that is how it is called as turnover ratios. That is how the name itself is given. Do remember, students, these are calculated on the basis of either COGS, that is cost of goods sold, which is the important thing there. And how to calculate COGS? It is simply sales minus GP. That is one equation there. And another one is opening stock plus purchases plus carriage inward plus wages plus all direct expenses and minus closing stock. This is the formula for calculating COGS there. So COGS can be calculated, students, by two ways, which you can see here. COGS अगर निकालना है बेटा, तो ये दो फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं. COGS is equal to simply sales minus gross profit. This is one of the formula for calculating COGS there. Whereas the another formula for calculating COGS is, it is opening stock plus purchases plus wages plus carriage inward, or you can say that all direct expenses there, plus carriage inward plus direct expenses whichever are required for making the product there, and obviously minus closing stock. So this is also one of the formula for calculating COGS there. So COGS इस तरह से भी निकाल सकते हैं बेटा. So these are the two formulas for calculating COGS there. This is formula number 1 and this is formula number 2. So I was telling you that activity ratios we are going to calculate it on the basis of turnover or cost of goods sold there. And what turnover ratios are indicating, students? Turnover ratio indicates the speed or number of times the capital employed has been rotated into the business or into the process of doing business. And obviously we all know that higher is the turnover, much it is better. That is how the business models like Cadbury, like Dettol and all these the brands are going on, and they are still reaping huge amount of profit. Amul is one of the example which offers a very less commission to all the distributors, any wholesaler, retailer, because the brand is very popular, but turnover is very high, students. Let me remind you that high turnover will give good profitability as far as these brands are concerned, and that is how stock or turnover ratios or activity ratios are very important here, which you can see there. So let's discuss all these ratios, and do remember, students, the standard for turnover ratios is basically higher it is, better it is. So जितना high आपका turnover रहेगा उतना better रहेगा. That is what it is, the standard for all turnover ratios. The first turnover ratio is stock turnover ratio, which is also called as inventory turnover ratio. इसी को stock turnover, inventory turnover बोला जाता है. As I told you, students, higher is the turnover, much it is better, because it shows that your stock is rotated so many times. तो जितना ज्यादा rotate होगा उतना ज्यादा profit होगा, सीधी बात है, because it is simply nothing but it shows that max of the times you are converting into sales, that sales is converted into cash and profit. Absolutely, that way around these turnover ratios are expected. So this ratio indicates the relationship of COGS during the year along with average stock. आप फॉर्मूला देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे STR ITR का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. एंड हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्टॉक? that is opening stock plus closing stock divided by 2. That is how it is calculated. COGS मैंने अभी आपको बताया COGS किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और आप देख सकते हैं COGS is net sales minus GP. So this is what the formula given here, which I told you already there. कि COGS निकालने का एक फॉर्मूला बेटा, sales minus gross profit. Here it is given net sales minus gross profit. That if there is sales written or written inward, that should be deducted from the sales, so it can be called as net sales. Effective sales, उसमें से आप gross profit minus करेंगे तो आपका cost of goods sold आएगा. Average stock का फॉर्मूला है opening stock plus closing stock divided by 2. And if average stock is not available in the question, then we can use only closing stock. That is what the note given here. If average stock cannot be calculated, then we can take closing stock only. And
Significance: this ratio indicates obviously whether the stock has been used or not efficiently. It shows the speed with which the stock is rotated into cells or the number of times the stock is turned into cells during the year. तो ये साल में जितनी ज्यादा बार होगा उतना बेटर है बेटा. स्टॉक जितनी ज्यादा बार रोटेट होता है उतना बेटर है. 5 टाइम्स अगर होता है तो आपने देखना चाहिए 6 टाइम्स हो, 7 टाइम्स हो, 8 टाइम्स हो. बिकॉज जितना ज्यादा बार रोटेट होगा इसका सीधा मतलब है उतनी ज्यादा बार आप सेल करेंगे और उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होते रहेगा. दैट इज हाउ इट इज. हायर इज द टर्नओवर, मच इट इज बेटर. सो ऑल टर्नओवर रेशियोज आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑन हायर साइड, व्हिच यू कैन सी. द हायर द रेशियो द बेटर इट इज, as it indicates the stock is selling very quickly, very rapidly. In a business where stock turnover ratio is high, goods can be sold at even low margin of profit as well, because high turnover ratio, and even then profitability may be quite high. जहां पे एग्जांपल मैंने आपको बोला, that is Cadbury, Amul, Dettol, इनका बहुत ज्यादा टर्नओवर है बेटा. That is how high turnover is much better. Though the margin of profit is less, that doesn't matter, but high turnover can give you good amount of profit. So that is all about the stock turnover ratio, inventory turnover ratio, my dear. Next is debtors turnover ratio. And obviously we all know that debtors are nothing but the customers to whom goods has been sold on credit basis and money is yet to be received from them. तो देखते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूला क्या दिया बेटा. अब डेटर्स क्यों क्रिएट होते हैं? डेटर्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ credit sales. So the formula simply is DTR or you can see RTR, that is receivables turnover ratio as well. Debtors को receivable turnover भी बोला जाता है. स्टूडेंट्स आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत बार बोला है, the combination of debtors plus bills receivable is called as accounts receivable. ये दोनों को हम accounts receivable बुलाते हैं. आपने देखा होगा debtors plus bills receivable. और ये bills receivable क्या होते हैं? These are nothing but the customers again to whom goods has been sold, but the problem is that you don't have faith on them. तो आपने उसको bills एक एक्स्ट्रा बिल ड्रॉ किया है फॉर योर सेफ्टी, एंड दैट इज हाउ दोज आर कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल. डेटर्स तो आपके रूटीन कस्टमर्स है जिनको आप बेचते हैं और ये 2 या 3 महीने बाद आपको पैसा पे करते हैं. दैट वे अराउंड. सो डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इज अकाउंट्स रिसीवेबल, एंड दैट मैटर्स अ लॉट. रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी आप निकाल सकते हैं या डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं. तो फॉर्मूला बड़ा आसान है बेटा. डेटर्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स, रिसीवेबल्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स. अगर क्रेडिट सेल्स ही नहीं होंगे तो डेटर्स या रिसीवेबल्स का कोई लेना देना नहीं. तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स. एवरेज डेटर्स इज ऑब्वियसली ओपनिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स प्लस क्लोजिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, और एल्स द फॉर्मूला इज क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स. सिमिलरली ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, इसका आगे का एक्सपेंशन रहेगा. तो व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो, provision for bad and doubtful debts is not deducted from debtors. जब ये रेशियो निकालते हैं तो अपन आरडीडी जो आरडीडी है, आरबीडी है, आरबीडीडी है, वो डिडक्ट नहीं करते, so that it should not give a false impression that debtors are collected quickly, क्योंकि वो माइनस करने का कोई ऑप्शन नहीं बनता है. so that is how it is given. सिग्निफिकेंस क्या है? debtors turnover ratio किस तरह से इंपैक्ट करेगा? जैसे मैंने बोला आपको, any turnover ratio is believed as higher to be on better side. Now what is given? This ratio indicates the speed with which the amount is collected from debtors. So obviously ये बिजनेस के लिए कब अच्छा रहेगा? जितना आप फटाफट कलेक्ट करेंगे पैसा, जितना आप रैपिडली कलेक्ट करेंगे पैसा, that will be good for the business. So the higher the ratio, the better it is, since it indicates that the amount from debtors is being collected more quickly. ये रेशियो जितना ज्यादा है उतना बेटर है. तो ये सीधा समझ लीजिए बेटा, जितना ज्यादा रेशियो है मतलब ये सीधा बताता है कि आप फटाफट पैसा इनसे कलेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ इट इज गिवन. द मोर क्विकली द डेटर्स पे, द लेस द रिस्क फ्रॉम बैड डेट्स. डेटर्स जितना जल्दी पे करेंगे तो बैड डेट्स का रिस्क भी उतना कम रहेगा. दैट इज हाउ डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज बिलीव्ड टू बी हायर on good side, and so the lower the expenses of collection and increase the liquidity of the firm. By comparing the debtors turnover ratio of the current year with the last year, it may be assessed whether the sales policy of the management is efficient or not. So debtor turnover ratio अगर आपका ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता है, इसका सीधा साधा मतलब है कि आपकी कलेक्शन पॉलिसी जो है वो बड़ी अच्छी है, बड़ी इफिशियंट है, बिकॉज आपका टर्नओवर रेशियो इज कीप ऑन इंक्रीजिंग. मतलब पैसा बहुत जल्दी आपका रिलीज हो रहा है फ्रॉम डेटर्स. So that is how debtors turnover ratio is believed to be on higher side. इसलिए debtor turnover ratio अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि ये हायर साइड पे बेटर रहेगा. That is how debtors turnover ratio is believed to be on higher side along with stock turnover or inventory turnover ratio. So let's go for the next ratio my dear. Stock turnover, debtor turnover दोनों हायर एक्सपेक्टेड है.
क्योंकि एक में स्टॉक जितना ज्यादा सेल्स में कन्वर्ट होगा प्रॉफिट ज्यादा होगा, और दूसरे में डेटर्स जितनी जल्दी कैश दे देंगे उतना बेटर है ना। तो बैड डेट्स भी कम और बिजनेस खुश, दैट अमाउंट कैन बी अगेन यूटिलाइज्ड फॉर फर्दर पर्पसेस। नेक्स्ट रेशियो इन दिस category is ADCP, my dear, average date collection period ratio. सिंपली इट इज आल्सो average collection period ratio भी इसको बुलाया जाता है। ये एग्जैक्टली उल्टा है डीटीआर का या आरटीआर का, डेटर्स टर्नओवर या आरटीआर का फॉर्मूला देखते हैं। दिस रेशियो इंडिकेट्स द टाइम विद इन विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड रिसीवेबल, कितने टाइम में पैसा वापस आता है ये बताता है। और फॉर्मूला देखिए, एडीसीपी और एसीपी इज इक्वल टू 1/DTR, मैंने बोला ना ये रिवर्स है बस, एंड और आरटीआर इज इक्वल टू और 1/DTR और आरटीआर मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स पब्लिक 365 डेज और 52 वीक्स। ये आपको डेज में निकालना है, वीक्स में निकालना है या फिर ईयर में निकालना है, तो सॉरी मंथ डेज या वीक्स में निकालना है तो उस तरह से लेंगे बेटा। मंथ में निकालना है तो इंटू 12 करेंगे, डेज में निकालना है तो इंटू 365 करेंगे, वीक्स में निकालना है तो इंटू 52 करेंगे। देख सकते हैं आप एवरेज डेटर्स और एवरेज रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स, फॉर्मूला उल्टा हो गया। वहां पे क्या था फॉर्मूला डेटर्स टर्नओवर में, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स और एवरेज रिसीवेबल्स। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हुआ, एवरेज रिसीवेबल्स इज न्यूमरेटर और एवरेज डेटर्स इज न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इज डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स और 365 डेज और 52 वीक्स, इस तरह से आएगा। एंड क्रेडिट सेल्स पर डे, अगर डे के हिसाब से निकालना है तो नेट क्रेडिट सेल्स ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 365, सो एडीसीपी। एंड डू रिमेंबर डेटर टर्नओवर हायर बेटर है लेकिन एडीसीपी लोअर बेटर है। कैसे, ये सिग्निफिकेंस में आप देख सकते हैं। दिस रेशियो शोज द टाइम विद इन विच द कस्टमर्स आर पेइंग फॉर क्रेडिट सेल्स। ये रेशियो बताता है कि कस्टमर क्रेडिट सेल्स के लिए पैसा कितने टाइम में पे कर रहा है। सो हायर डेट कलेक्शन पीरियड इज दस an indication of inefficiency and negligence on the part of management। तो अगर हाई डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो है, दैट इज एडीसीपी एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो, और एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशियो ये अगर हाई है, हाई मतलब ज्यादा नंबर ऑफ डेज, ज्यादा नंबर ऑफ वीक्स, ज्यादा नंबर ऑफ मंथ्स, इसका मतलब है कलेक्शन में टाइम लग रहा है। एंड ऑब्वियसली ज्यादा कब बोल पाएंगे एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर रिजल्ट देन। So that is how ADCP is believed to be good on the lower side, not on higher side, क्योंकि ये कलेक्शन पीरियड रेशियो था। डेटर टर्नओवर बताता है कि आपको पैसा कैसे कन्वर्ट हो रहा है क्रेडिट सेल में। क्रेडिट सेल में आपका हाउ इट इज कन्वर्टेड, क्रेडिट सेल से पैसा आपको कैसे जनरेट हो रहा है। ये क्या बताता है कि आपका डेटर पैसा कितने टाइम में दे रहा है, तो जितने कम टाइम में देगा उतना बेटर है बिजनेस के लिए। दैट इज हाउ दिस रेशियो शोज द टाइम इन विच द कस्टमर्स आर पेइंग फॉर द credit cells। higher date collection period is thus an indication of inefficiency of the business। तो ADCP lower होना चाहिए। and negligence on the part of management, on the other hand, if there is a decrease in the debt collection period, it indicates prompt payment by debtors which reduces the chances of bad debts। तो ADCP जितना कम उतना बिजनेस के लिए अच्छा है, मतलब पैसा बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है। तो फॉर्मूला याद रखिए बेटा, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, डीटीआर का या आरटीआर का फॉर्मूला क्या है, इट इज सिंपली क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स और एवरेज रिसीवेबल्स। उसको ही उल्टा करना है। अगर आपको एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा एवरेज डेटर्स और एवरेज रिसीवेबल्स होल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स एंड होल मल्टीप्लाइड बाय आइदर 12 मंथ्स, 365 डेज और 52 वीक्स। तो इस तरह से ये निकाला जाएगा एंड दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये देखिए आगे चलते हैं, तो ये लेस बेटर रहेगा बेटा डेट कलेक्शन की बात जब आती है। अगला फॉर्मूला है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। जैसे डेटर्स वैसे क्रेडिटर्स। डेटर्स अराइजेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिटर्स अराइजेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेसेस। सो दैट इज हाउ इट इज। दिस रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेसेस एंड एवरेज क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था बेटा, दैट इज क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। यहाँ पे क्या रहेगा, क्रेडिट परचेसेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, बिकॉज क्रेडिटर्स अराइजेस ड्यू टू क्रेडिट परचेसेस। तो देख सकते हैं आप फॉर्मूला सीटीआर और पीटीआर इज इक्वल टू क्रेडिट परचेसेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स और एवरेज पेबल्स। दैट इज व्हाट द फॉर्मूला। सेम अगेन, that higher it is better it is। if the amount of credit purchases is not given in the question then all purchases are assumed as credit purchases। जो टोटल परचेस दिए उसी को क्रेडिट हम मानते हैं, अगर क्रेडिट परचेसेस का अलग से स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन में नहीं दिया तो। सेम अजम्पशन फॉर क्रेडिट सेल्स। सिग्निफिकेंस क्या है, दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड विथ विच द अमाउंट इज बीइंग पेड टू क्रेडिटर्स। ये रेशियो बताता है कि आप कैसे अमाउंट से क्रेडिटर्स को पैसा पे करते हैं, कौन सी स्पीड से।
The higher the ratio, the better it is, since it will indicate that creditors are being paid more quickly, which increases the credit worthiness of the firm. तो ये रेशियो जो है ये हाइयर बेटर माना जाता है बेटा. क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट करता है क्रेडिटर्स को आप अगर पे करेंगे मोर क्विकली तो उनका ऑब्वियसली क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाएगा, बिकॉज यू नीड टू पे टू योर क्रेडिटर्स, योर सप्लायर्स ऑन क्विक बेसिस, प्रॉम्प्ट बेसिस. जितना जल्दी पे करेंगे उतना बेटर है. तो हाइयर इट इज बेटर इट इज. तो याद रखिए सारे टर्नओवर रेशियो हाइयर इट इज बेटर इट इज बेटा. स्टॉक टर्नओवर है, डेटर्स टर्नओवर है, अभी क्रेडिटर्स टर्नओवर है. और डेटर्स टर्नओवर को आप रिसीवेबल टर्नओवर बुला सकते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर को आप पेबल टर्नओवर भी बुला सकते हैं. दैट इज हाउ इट इज एंड इट शोज दैट योर क्रेडिट वर्दीनेस इज गोइंग टू इंक्रीज एज लॉन्ग एज द रेशियो इज हायर. फिर से एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो आया बेटा, उल्टा एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बोला. डेटर्स कलेक्शन पीरियड का उल्टा क्या, डेटर्स टर्नओवर का उल्टा एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशियो. डेटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला था क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, और कलेक्शन पीरियड का है एवरेज डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स, वीक्स और डेज. उसी तरह से क्रेडिटर्स टर्नओवर है फॉर्मूला क्रेडिट परचेसेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, और यहाँ पे फॉर्मूला आएगा दैट इज क्रेडिट average creditors divided by credit purchases multiplied by 12 months or 52 weeks or 365 days that you can see here. ये देखिए that is 1 upon CTR और PTR, that is 1 upon CTR और PTR मतलब रिवर्स हो जाएगा रेशियो, and multiplied by days, weeks और months. और significance देखिए जितना लोअर है उतना बेटर है, as it is a shorter payment period implies that the creditors are being paid rapidly. क्योंकि शॉर्टर पेमेंट पीरियड अगर बताता है इसका मतलब है आप क्रेडिटर्स को पैसा बड़ा क्विकली पे कर रहे हो. So the lower the ratio, the better it is, because the shorter payment period implies that the creditors are being paid rapidly. That is how this ratio is given, my dear. Next is fixed asset turnover ratio. आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फिक्स्ड असेट आपका टर्नओवर में कैसा उसका कन्वर्जन है. That is how we are going to see. This ratio reveals how efficiently the fixed assets are being utilized in the business. आपके फिक्स्ड असेट्स बिजनेस में किस तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं. ऑब्वियसली फॉर ऑल टर्नओवर रेशियोज द बेसिस इज सीओजीएस और सेल्स. फॉर्मूला नेट सेल्स और सीओजीएस और नेट सेल्स अपॉन नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड असेट. दैट इज द फॉर्मूला. नेट फिक्स्ड असेट का मतलब है फिक्स्ड असेट माइनस डेप्रिसिएशन. टर्नओवर रेशियो बेटा, टर्नओवर रेशियो का सीधा साधा मतलब है हायर इट इज बेटर इट इज, बिकॉज इट शोज दैट मोर नंबर ऑफ रोटेशन फॉर दैट पर्टिकुलर असेट क्लास, may it be stock, may it be debtors, may it be creditors, and may it be fixed assets. So let's see this ratio in particular importance in manufacturing concern. ये manufacturing concern में काफी important है, where the investment in fixed asset is quite high compared with the previous year. If there is increase in this ratio, it will indicate that there is a better utilization of fixed assets. If there is a fall in this ratio, it will show the fixed assets have not been used efficiently as they had been used in the previous year. याद रखिए बेटा रेशियो का यूटिलिटी है कंपैरिजन में. कंपैरिजन करो या तो खुद के रिजल्ट के साथ लास्ट ईयर के, या तो किसी कॉम्पिटिटर के साथ, उसके बिना ये रेशियो का यूटिलिटी नहीं है. सो डू रिमेंबर रेशियोज यूटिलिटी लाइज इन कंपैरिजन. तो अगेन फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो भी हाई इट इज बेटर इट इज, बिकॉज इट शोज दैट योर फिक्स्ड असेट्स आर रोटेटेड इन अ प्रॉपर मैनर if it is higher ratio as compared to the last year. Next ratio, my dear, it is working capital turnover ratio. Working capital, we all know students, that is simply difference between current assets and current liabilities. What is current assets is nothing but all the short-term assets which are easily converted into cash within one accounting year. For example, cash in hand, cash at bank, along with that stock, inventory, debtors, bills receivable, prepaid expenses, short-term investment. ये आपके सारे current asset है. और current liabilities क्या है? All the short-term liabilities which are liable to be paid within one accounting year with the help of existing current assets. ये दोनों का difference है बेटा. जैसे कि current liability के example है creditors, bills payable, outstanding expenses, bank overdraft, and at the same time you can say that short-term loan taken. All these are nothing but the current liabilities. So देखिए ratio, this ratio reveals how efficiently working capital is utilized in the business and for converting into sales. Formula working capital turnover ratio is net sales or COGS upon working capital, and working capital is CA minus CL. So COGS का फॉर्मूला देखिए जो मैंने आपको ऊपर बताया था बेटा. यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये पहला फॉर्मूला है बेटा COGS कैलकुलेट करने का. और दूसरा है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. आप बताएंगे, आप सोचेंगे कि ये COGS होता क्या है सर? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है.
दिस कंसिडर्स ओनली माय डियर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। ये सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर कर सकता है बिजनेस के, इसलिए इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर करता है इन टर्म्स ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, along with that it is going to deduct the closing stock, क्योंकि अभी तक बेचा नहीं गया है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताता है अभी तक आपने कितना बेचा है। इसलिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आगे देख सकते हैं आप, और सेल्स माइनस जीपी इज अदर फॉर्मूला एंड वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल। आगे देखिए बेटा, significance, this ratio is of particular importance in non-manufacturing concern. Why? Where current assets play a major role in generating sales. It shows the number of times working capital has been rotating in producing sales or turnover. High working capital turnover ratio shows efficient use of working capital and quick turnover of current assets like stock and debtors. So जितना हाई रहेगा उतना बेटर है, क्योंकि ये एक तो बताता है कि आपका वर्किंग कैपिटल इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड है, और दूसरा क्विक टर्नओवर ऑफ करंट असेट्स लाइक स्टॉक एंड डेटर्स, दैट इज वन थिंग। लो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये अगर लो रहेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका इफेक्टिवली यूज आप नहीं कर रहे, इसका ये मतलब होता है बेटा। टर्नओवर रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स, ये याद रखिए, सारे टर्नओवर रेशियोज टाइम्स में एक्सप्रेस होते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 2.4 टाइम्स, जो भी आंसर आ रहा है टाइम्स लगाने का, बिकॉज इट शोज विद द रोटेशन विथ विच यू आर कन्वर्टिंग इनटू सेल्स। तो वो स्टॉक हो या इन्वेंट्री हो, वो डेटर्स हो, वो क्रेडिटर्स हो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर हो, या फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, याद रखिए सारे टर्नओवर रेशियो इस तरह से हम देखेंगे। और देखिए बेटा लास्ट लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल टर्नओवर रेशियोज आर बिलीव्ड टू हायर एज बेटर। सारे टर्नओवर हम अच्छे मानते हैं अगर वो हायर साइड पे है, जैसे कि स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, उसके बाद क्रेडिटर्स टर्नओवर, फिक्स्ड असेट टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। दो रेशियोज एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो हाई अच्छे नहीं माने जाते, लो अच्छे माने जाते हैं, दैट इज एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो, क्योंकि एक क्रेडिटर्स को पे करने के बारे में है और दूसरा डेटर्स से रिसीव करने के बारे में है। तो डेटर्स को जितना जल्द पैसा आएगा उतना बेटर है बेटा, और क्रेडिटर को भी जितना जल्दी देंगे उतना क्रेडिट वर्दीनेस आपके बिजनेस को माना जाएगा। तो सिर्फ टर्नओवर रेशियो याद रखिए, एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड रेशियो, ये जितने कम है उतने बेटर माने जाते हैं, जबकि बाकी सारे हायर बेटर माने जाते हैं, जैसे कि स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर हो, या फिर आपका डेटर्स टर्नओवर हो, क्रेडिटर्स टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर हो, या फिक्स्ड असेट टर्नओवर हो। ये सारे रेशियोज हायर is believed as on the better side there, because it shows that the conversion into sales or turnover is on higher side, which shows that the profitability will be more and more. I hope you are enjoying this particular lecture my dear. So we are done with all 4 categories of ratios. हमने सबसे पहले liquidity ratios देखे थे, उसके बाद हमने profitability ratios along with capital structure ratios देखे, और आज हमने देखे turnover ratios. Next lecture में अपन इसके sum देखेंगे। Just revise all these ratios along with the formula and let's be ready with the sums. Till that, thank you and have a wonderful day ahead. God bless you.